Hello everyone, am I audible? Yeah, we can hear you. Good. Sorry guys, I had to reinstall my app. I don't know what was the issue. It was not working. Good. Let me just update it. Chalo, let me share my screen. Let me know when you guys can see. Is my screen visible? Yes, sir. Good. Just. Chalo, let's start. We are already delayed. So how was the week, by the way? Sir, I just joined today. Not for the rest. Everyone else, how was the week? The week was good. Overall, there was amazing opportunity. For some reason, I did not trade it this week because I was busy with some other stuff. But overall, it was fantastic and still met some. Good. Thanks So for your call. great, great. Good. And what about Smita ma'am? How was your week? Anuj? So my week was also much better. लास्ट वीक से मतलब सीखा था कि अनुज साइड सॉरी लास्ट वीक सीखा था कि जब थोड़ा चॉपी या रेंज बाउंड मार्केट है तो एक्सट्रीम्स पे ट्रेड करना है तो Yes. दैट वे मैं फ्राइडे बच गया मैंने फ्राइडे कोई ट्रेड नहीं लिया और हाँ. लास्ट में मूवमेंट मिला था उसमें मैंने ट्रेड नहीं लिया बस नोटिस किया क्योंकि Yeah. उस दिन बहुत इरेटिक था मूवमेंट तो उस दिन मैं बच गया बिकॉज एक मतलब देयर वर मेनी अपॉर्चुनिटीज वेयर आई थॉट आई कुड हैव टेकन अ ट्रेड Yeah. बट इतना साइडवेज मार्केट था तो इट्स द फर्स्ट टाइम आई हैड अ लॉट ऑफ पेशेंस लाइक मेरे को समझ आया कि हर रोज ट्रेडिंग डे नहीं होता राइट Exactly. तो उस दिन कुछ नहीं किया मैंने तो वो भी एक नया इट वाज अ न्यू थिंग फॉर मी दैट See, this is very important. You cannot trade every day, every market. Okay. Or anything that you learn. Market में हर time you will get some signal, but not everything is correct. Sometimes you have to, and that is something which will not be in black and white. It will be gray. You'll have to make smart decision कि हाँ ठीक है आज रहने देते हैं नहीं करते हैं. सर आपने एक और चीज बोला था ना कोर्स के बाद एक महीना पेपर ट्रेड करना Yeah. और सिर्फ मेरी कॉल्स फॉलो करना फॉर अ वाइल तो Yeah. आई थिंक वो बहुत जरूरी है क्योंकि हमने अभी तक डिफरेंट फेजेस ऑफ मार्केट एटलीस्ट मैंने पर्सनली इतने इनकाउंटर नहीं करे अब मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ तो मेरे को आइडिया लग रहा है कि हाँ आज ट्रेड अभी नहीं बनता चाहे अगर हमें सिग्नल कैंडल दिख रहा है कुछ भी दिख रहा है बिकॉज वो एक पर्टिकुलर रेंज में है तो आई फील लाइक अगर मैं एक दो हफ्ते और पेपर ट्रेड करूंगा तो उससे फिर मेरे रिजल्ट्स बेटर हो जाएंगे क्योंकि अगर ट्रेड अपने वे में नहीं जाता साइकोलॉजी भी खराब होता है थोड़ा या एग्जैक्टली और फिर वो ट्रस्ट भी जाता है ना कि लगता है इंसान को कि लग रहा है कि मैं गलत सीखा हूँ मैं गलत कर रहा हाँ हूँ so एग्जैक्टली that happens but anyway good anyone else Ronak how was your week Better than previous week. चलो गुड यार प्रॉफिट में हो या लॉस में पहले ये बताओ Minor profit. चलो वो भी अच्छी बात है गुड प्रतीक हाउ वाज योर्स It was a very choppy market this week. So I took a few trades. I'm struggling a bit with entry right now. Like I can still trail and maybe uh, exit, but entry is still a bit of a problem for me. I cannot figure out when to enter, which is the correct time. I think that I need to work on more. no worries it will come with but just understand one thing see if your risk will be less okay market is always like या कहीं भी कोई भी
इंस्ट्रूमेंट देख लो, wherever your risk will be less, your reward will be less. For example, FD and all, you have a zero risk, so obviously the reward is less. You have a fixed 4%, 5%, whatever it is, right? The same is in market. In market where you see there is a entry with a big stop loss, but your risk is high. The probability of that trade to be successful is also very high Right. because your risk is high. Okay, and your reward will also be higher. The only problem with such trades ki haan, if it goes wrong, you end up losing a big amount. Okay, but market is always like that. The more your stop loss, the higher chances for that trade to be successful. It's very simple. Similarly, if your stop losses are small, then the chances of success for that trade might be small. But the good thing is ki if it is successful, you end up making a huge money on a very small risk. Okay, Right. so why I said this ki whenever like you are struggling with entries, many a time you might see that there is an entry which you might not find good. The entry is not good because risk is more and all those things. But end of the day, it will give you a good return if it is not good entry most of the time. It happens like that. Okay, so when you are taking trade, just manage your risks. Okay, एंड लिया करो ट्रेड लोगे तभी समझ में आएगा एंट्रीज तभी अच्छी होंगी सिर्फ देखते रहोगे तो नहीं हो पाएगा I'm taking trade, sir. I'm taking trade. But I mean, that part of the trade is where I'm struggling a bit, is what I'm saying. No worries, sir. If you are making money, then that is right. That's it. How was your week, Srinath? No, I think Srinath is on mute something. Gautam, how was your week? Yes, sir. Is basically what I'm trying is कि मैं intraday ही रख रहा हूँ. I'm trying to carry very less position. What is your capital? Capital, sir, I'm hedging my portfolio, so about 10 के आसपास capital है. You can then take swing trades also. Yeah. So there were a couple of swing trades where I think आपको भी याद होगा. I took your opinion also. Yeah, But yeah. I could not have the confidence to actually carry them through. पता नहीं क्यों कैरी नहीं कर पाया वो जैसे लगा कि यार एंट्री निकल गई हाथ से तो उसके बाद जब दोबारा वो कई बार लेवल्स पे भी आया फॉर एग्जांपल आपने पिछले वीक फार्मा की कॉल दी थी कि फार्मा इज वेरी गुड फार्मा की बाय की कॉल थी आपकी तो इस वीक फार्मा की 2-3 कॉल्स ऑप्शंस में लेकर मैंने ट्रेड करने की कोशिश करी आई didn't have the confidence to take swing trades in them. No, very nice. Pharma worked well this week. Pharma was बस हो गया फार्मा का वैसे जितना होना था और थोड़ा बहुत मैं आई एम ट्राइंग टू लर्न बाय डूइंग इंट्राडे बाय ड्राइंग ट्रेंड लाइंस जो आपने एक बार एडवाइस किया था कि जब वो मार्केट किसी ट्रेंड पे लगे 2-3 कैंडल्स ऑल्दो आई हैवंट टेकन द कोर्स बट मैं ट्रेंड फॉलो करने की कोशिश करी है सो इट हैज वर्कड अ कपल ऑफ टाइम्स फॉर मी नॉट ऑलवेज बट यस इट हैज एंड आई एम ट्राइंग टू लर्न पिरामिडिंग कि अगर पोजीशन हमारे फेवर में है तो वी कैन ऐड कपल ऑफ पोजीशंस ऑन द नेक्स्ट कैंडल वी कैन ऐड नहीं but in that you have to be careful because yes. if you do it wrong then you end up losing what you have made also yes that's what happened with me मेरे 2-3 बार गलत हो गया ट्रेड तो पिरामिडिंग के बारे में आपसे जरूर सर गाइडेंस चाहूँ यार मैं करता ही नहीं हूँ वही तो मैं बता रहा था लास्ट टाइम भी आई प्रेफर doing it ulta buying more first time and then reducing it not adding it pyramiding I do only in my investments the long term stocks I buy like I even give you guys now add it into this so there I do pyramiding like say Vedanta में हमने add किया and all right but trading में पता नहीं I don't feel like doing pyramiding apart from options may also I do pyramiding because options may again if the movement is on your side it's easy to add 1,000-2,000 quantity again and just remove it the next 20-30 points and make money from that so options may also do but futures may I prefer buying more at the start and then reducing it rather than pyramiding options may it's easy
when it is going in your favor, it's easy to look at that and do that. And options में starting में ज्यादा खरीदने में थोड़ा रिस्क भी रहता है, गलत हो गया तो काफी ज्यादा निकल जाता है लॉस, तो उसमें इट्स ओके, बट या इन फ्यूचर्स आई डोंट प्रेफर पिरामिड. Good. Anyway, chalo, let's start. So almost the week turned out the way we thought. Nifty Bank Nifty gave a dip like we expected in the starting, then again bounce. It was very much as we discussed. Let's see how markets are looking. Even if you see US also it's green, everything worked exactly how we thought it should. So again, now if you see, US markets are looking really, really good. Okay, good closing, almost at the top, it is at the top. Okay, so no selling pressure as of now. ठीक है, इतने बड़े कैंडल के बाद बढ़िया follow through. That again gives you us a confidence कि हाँ, this is going to continue. So this move should continue. Okay, and that's why we'll be bullish on US markets. ठीक है, Nasdaq अगर देखो very similar, right? Trend line breakout, good breakout from the trend line, good follow through, move will continue. Okay. सर एक क्वेश्चन है. हाँ हाँ पूछो. सर जैसे एक बार आपने बोला था जब द ट्रेंड लाइन जैसे ब्रेकआउट होता है तो ब्रेकआउट होते ही नहीं लेना है, वी हैव टू वेट फॉर अ सेकंड एंट्री. या तो सर वो सेकंड एंट्री का कॉन्सेप्ट क्या है, एक बार जस्ट कैन यू टेल मी, बिकॉज़ आई वाज स्ट्रगलिंग अ लॉट विद दिस पार्ट. सी द थिंग इज, जब भी आपका ये ट्रेंड लाइन मान लो एक है, ठीक है. हाँ ठीक है सर. नाउ देयर आर टू वेज टू टेक ट्रेड. अब यहाँ पे अगर ब्रेकआउट होता है, ठीक है. नाउ इफ दिस कैंडल इज रियली गुड, जिस पे ब्रेकआउट हुआ, ओके ओके, एंड आई सी अ फॉलो थ्रू, आई विल बाय. ओके, बट से यू आर अ सेफ ट्रेडर. Okay, it's better that you wait for retracement and buy somewhere here at the test. Okay, once it tests this previous low, you buy somewhere here if you see कि हाँ ठीक है now, because this kind of becomes a double bottom, you know, and that's a better entry. But that doesn't mean you cannot enter here. It's just that this is a better entry with a low risk. Okay, because even if you are wrong here, you lose only little, right? While here, if you are wrong, you end up losing this whole thing. Okay, so that's the only difference. So it boils down mainly to how you prefer trading, how you are as a trader, how much is your capital, what is your risk appetite, and all those things. So sir, by second entry you mean we wait for the double bottom or do we wait for a higher high? वही मतलब they are two absolutely opposite things. Yes, but see, if there is a trend line, okay, Right. if there is a trend line, okay, it's not about double bottom or a higher high. यहाँ पे तुम्हारा ये लो था, ठीक है, ये यहाँ पे ब्रेक हुआ, ठीक है. Now even if it forms a lower low, but from here once you see a green candle, reversal candle, okay, जैसे हमने कोर्स में पढ़ा था, you can still go look for buying, okay, at that time. So चाहे वो lower low बने या you know ये ऊपर ही रहे लो, doesn't make much of a difference. Okay, दोनों को हम डबल बॉटम बोल सकते हैं, चाहे वो यहाँ बने चाहे ये यहाँ बने. That I got, but sir second entry मतलब second entry as in सोचिए जैसे ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ऊपर गया. See, for I'll give you an example. ये देखो यहाँ पे ये नीचे आया है, lower than this low, right? Right. It's lower than this low, but still it bounced back. Right. तो अब यहाँ पे ये नहीं सोच सकते कि लोअर लो बन गया तो वो क्लासिकल थ्योरी है कि लोअर लो है तो मतलब वो डाउन ट्रेंड है, हायर हाई है. ऐसे नहीं होता. प्राइस एक्शन देखो, इसीलिए मैंने बोला था जितना आज तक पढ़ा है वो एक तरफ, जो प्राइस एक्शन का जो कोर्स था वो एक तरफ. देयर इज अ बिग डिफरेंस. ये लोअर लो है, क्लासिकली यू शुड फील लाइक हाँ नाउ अगेन वी शुड गो अहेड एंड शॉर्ट. इवन अगर इस ट्रेंड लाइन में देखो तो एक लोअर लो है, बट स्टिल इट वेंट अप. सो why it went up? Because you have to see this candle which reversed this. ये पूरा नीचे आया, everyone is short. Understand the psychology. एक भी reversal आया, all these shorts will panic. Right. And that's gave rise to this big huge green candle. अगर यहाँ पे इसको गिरना होता, ये कैंडल इतना ऊपर जाकर ऊपर क्लोज ही नहीं होती, यहाँ पे वापस सेलिंग आती. This candle closing here in itself means
that shorts already exited. अच्छा करेक्ट। तो सर Right. जैसे एक चीज और होता है, जैसे ये ट्रेंड लाइन जब आपने बनाया है नीचे में, हाँ तो बहुत बार वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, तो बाय डिफॉल्ट कभी ना कभी तो प्राइस उसके ऊपर जाएगा अनलेस प्राइस भी गिरते जाए। हाँ। तो दैट इज वन थिंग। सेकेंडली एक होता है कि एक बड़ा ग्रीन कैंडल बन के वो ट्रेंड लाइन निकला। See, you have to see at this point जो कैंडल आपका ब्रेकआउट हुआ वो कैसा है। हाँ दैट्स व्हाट आई वांटेड टू नो। ठीक है, अब जैसे समथिंग विथ अ बिग, ये ब्रेकआउट हुआ बट वहां पे यू सी अ बिग अपवर्ड विक या ब्रेकआउट कैंडल इज रेड कलर, ओके, in that case you will not go long there because then you should wait for the second entry, okay, but the breakout, again the red green wala, let it come down and see what happens, whether it is continuing downside or whether it is showing a reversal. and assuming sir नीचे नहीं आया ऊपर जाने लग गया, so then again we can enter. Yes, again you can enter. अगर सोचिए ये नीचे आता ही नहीं है ऊपर जाते जाता, तो again then we go with our price action definition. क्या you always use your price action, always. Okay, so we have to wait for a red then a green and then when that green is taken out we'll buy. Yes, क्योंकि सर मैं ये वीक में उसी में 2-3 बार फंसा, दैट बहुत बार वो ट्रेंड लाइन रहता है वो काफी नीचे है, तो कभी ना कभी तो प्राइस विल गो अबव इट बिकॉज इट्स दैट लाइन इटसेल्फ इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन, yeah, बट द कैंडल का साइज इज इन अ वे शोइंग कि इट्स नॉट अ वेरी एंट्री कैंडल टाइप काइंड ऑफ अ थिंग, बट लगता है नहीं यार ट्रेंड लाइन टूट रहा है तो चलो लेट्स टेक अ चांस, सो दैट्स अ रॉन्ग वे ऑफ थिंकिंग ना। yes, it's not that always there is a trend line break. अब जैसे यही देख लो, यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे अगर तुम बनाओगे इधर, ठीक है, राइट, यहाँ पे ब्रेक जो हुआ, ठीक है, अब यहाँ पे इफ यू गो शॉर्ट यू वुड हैव लॉस्ट इट, बट दिस कैंडल शोज इट ना कि नीचे देखो बाइंग हुई है, भले ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ है बट देयर इज अ बाइंग, दिस इज नॉट अ वेरी गुड कैंडल, फॉलो थ्रू कैंडल, राइट, so you should not short it here, you should wait for the second entry, and then once the second entry you saw this red continuation, good double top in place, yeah, you short, you make good money here. ओ अच्छा करेक्ट, ठीक Right. हाँ हाँ, So अब दो यहाँ पे ये trend line break हुआ, but here you will not, because of the type of the candle with at breakout of Yes. this trend line, you don't have confidence in, you know, the sellers here at the breakout. राइट, Clearly you cannot see any, अगर यही closing यहाँ पे होती, I would have sold it off. But this candle shows me कि कोई confidence ही नहीं था sellers में, right? ठीक है, यस सर, यस, चलो गुड। एनीवे, सो डाउ जोन्स भी देखो गाइस, सो ऑलमोस्ट वेरी सिमिलर, गुड ब्रेकआउट, ये ट्रेंड लाइन था, बनाया नहीं मैंने, देख समझ में आ ही रहा होगा, ये ट्रेंड लाइन है, ब्रेकआउट, गुड फॉलो थ्रू, स्टिल लुक्स गुड, ओके, बुलिश। नाउ यूरोप में देखो, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, अब यहाँ पे देखो फॉलो थ्रू नहीं आया है, tested the high, slid down. So here what you can think of, यहाँ पे you should not go long, you should go long only if this high is broken, and if this low is taken out you should look to go short, because this may turn out to be something like this and then this, right? So unless the past week high is taken out, higher chances are कि नीचे वाला जाएगा, right? Now this is not a very good reversal candle, because again इस candle को देखो, it's more like a doji, okay, just a sideways movement, so हो सकता है ये flag हो और यहाँ से ऊपर निकल जाए, but you don't know right now कि ये ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, it's a doji, so your trade should be based on कि अगर ये उसके ऊपर का गया तो you go long, इसके नीचे गया तो you should go short, ठीक है। Now if you look, why we look at all the global indices, तो सब देख के कुछ आइडिया लग जाता है कि किधर साइड मार्केट करवट लेगा। अब अगर यूएस मार्केट हमने देखा तो वो बुलिश ज्यादा दिख रहा है, सो मोस्टली ये दोजी भी रिजॉल्व कहाँ होगी, ऊपर के साइड में इंस्टेड ऑफ डाउन, राइट? सो दो हियर एज अ दोजी आई कैनॉट गिव यू अ वेरी क्लियर कट डायरेक्शन, बट लुकिंग एट अदर इंडाइसेस द आइडिया शुड बी टू बी बुलिश, plus the previous candle is very bullish, this is just a sideways movement, might be a flag, तो या तो ये साइडवेज रहेगा या बुलिश होगा, दो में से एक चीज, बेयरिश नहीं होना चाहिए, सो दैट्स आल्सो लुक्स मोस्टली बुलिश टू साइडवेज।
Same with euro. Okay, just like DAX, bullish to sideways. UK stocks clearly bullish. Okay, निक्की देखो एशिया में अगेन, अब देखो निक्की कहाँ पे है, क्लोजिंग बहुत स्ट्रांग है बट नियर द ट्रेंड लाइन, सो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है. नाउ यू शुड लुक कि अगर यहाँ पे अगर आपका ब्रेकआउट होता है इसके ऊपर, मोस्ट ऑफ द टाइम ब्रेकआउट्स फेल. ओके, बट एट द सेम टाइम द ग्लोबल आउटलुक, नाउ यू सी द ग्लोबल आउटलुक इज वेरी बुलिश. सो हियर you should take a chance to go long if there is a breakout above the previous week high. Okay, this breakout should actually continue because rest of the market is looking good. Okay, but at the same time अगर ये बाकी market slide करने लगे तो this is a very good setup to go short. Okay, so right now the outlook on this will also be bullish. Last week भी bullish ही थे सारे index, अभी भी सब bullish ही लग रहे हैं. चाइना देखो तो यहाँ पे काफी बढ़िया रिवर्सल लिया था, बट ये क्या है, दिस इज जस्ट लाइक अ सेलिंग कैंडल, जस्ट लाइक डाउनवर्ड मूव में एक आपका पुल बैक आया था. दिस यू शुड लुक टू शॉर्ट एट अ लो बिलो प्रीवियस लो. ओके, इस लो के नीचे अगर जाता है यू शुड एक्चुअली लुक टू शॉर्ट. हैंगसेंग, हैंगसेंग देख के क्या लगता है, अगेन ट्रेंड लाइन से इसने रेजिस्टेंस लिया. ओके, सो दिस लुक्स लाइक अ गुड शॉर्ट बिलो लास्ट वीक्स लो अगेन. अब देखो अभी तक हम जो देखा था हमने उस हिसाब से लग रहा था निकेई शुड बी पॉजिटिव, बट इफ यू सी एशियन स्टॉक बोथ आर लुकिंग नेगेटिव, दीज टू इंडाइसेस. Nikkei is also at its resistance, so high chances Nikkei can actually drop down from here. Okay, so let's make it sideways as of now instead of putting it as a bullish or bearish. So अब यहाँ से अगर ये स्लाइड होता है 5 मिनट 10 मिनट कैंडल में, if you see at this stop से अगर ये स्लाइड होता है you should actually look to short. Yeah, so that's how we keep updating. अब अभी तक मैंने नहीं देखा था तो मुझे बुलिश लग रहा था, बट फिर मैंने देखा अभी कि नहीं भाई एशिया में तो बेरिशनेस है. तो Nikkei being an Asian index, I would rather look to short it in line with other indices rather than go long on it. ठीक है? So this is how you have to use your brain, man, use your logics. ठीक है? Anyway, डॉलर में क्या लगता है, साइडवेज है जस्ट, इसमें अभी कोई डायरेक्शन नहीं है. ये आपका अपवर्ड मूव था, ये फिलहाल ये साइडवेज चल रहा है. फॉर एन अप मूव इट हैज टू क्रॉस ये जो रेड कैंडल है इसका हाई. फॉर अ डाउन मूव इट हैज टू क्रॉस ये जो ऑलरेडी लास्ट वीक हमने डिस्कस किया. तो नथिंग हैज हैपेंड, जब तक ये नहीं है तब तक ये साइडवेज टू बुलिश. बुलिश क्यों? क्योंकि दिस कैंडल इज ग्रीन, मोस्टली इट विल बी साइडवेज टू बुलिश. And this also explain why US and European markets are looking good while Asia is looking bad, because dollar की bullishness से while US markets flourish, Europe flourishes a bit, not that much. Other markets, mainly the emerging markets, Asian market, they decline. So it's also something which gives you an idea why you are seeing a red on Asian indices while the Western indices are looking good. ठीक है? Now look at gold. Last week it came down. We said if it goes below this, we'll short. It actually hasn't. It's in a sideways movement. Okay, it's not a bullish movement, but at the same time, above this candle, if it goes, you should look to buy. If it goes below this, you should look to short. Mostly, it will slide down. This is already I've made this direction. This is what gold should follow. Okay, तो gold का लग रहा है हो गया है. Okay, just need to wait for this level. 91,000 का जो level है gold पे, let it just be taken out. Once it is taken out, it should fall. So right now it is looking what? Sideways, but the idea should be to be sideways to bearish. Okay. Crude में देखो, क्रूड में बढ़िया ड्रॉप. अब देखो क्रूड में भी ये क्या है, पूरा रेंज है, ये ऊपर का रेंज है, बहुत बड़ा रेंज ही है और कुछ नहीं है. मतलब यहाँ पे खरीदना है, यहाँ पे सेल करना है. तो दिस इज लुकिंग बुलिश, बट इट विल नॉट क्रॉस दिस रीसेंट हाई. मोस्टली इट विल गो हियर समवेयर नियर दिस, मेक अ डबल टॉप एंड अगेन इट विल स्लाइड डाउन. So crude पे idea should be to buy, but this is your limited upside. It's not going to cross over this. Mostly what I feel, long term top of crude has already been made.
I don't see crude going above this. Okay, plus if you see this slide, it's almost like a supply zone. If you see यहाँ पे ये दोनों levels almost similar, looks like a supply zone. If you see a slide coming, you should be ready equally to short it. Okay, you should buy crude only above last week's high. Above last week's high, you can buy crude for a target closer to the recent high. That's it. It's not going to go above that. Okay, so on crude, the view is bullish for now with a limited upside. Currencies देखो sideways है, no, not much of a directional view. Okay, just if you look at this whole trend, then it looks like this trend might continue and it would slide, and that is in line with dollar being sideways to bullish. If dollar becomes bullish, this becomes sideways to bearish. Okay, so this will, like जैसे dollar हमारा buy था last week high के ऊपर, this will be a sell below last week's low. Both will happen at the same. So this is sideways to bearish, dollar is sideways to bullish. Pound देखो very similar, ऊपर से काफी selling आई है. If you see again इसमें अगर इसके नीचे गया तो you can sell, but not a very good signal candle for a short. So just leave it. Okay, no need to have a view on everything. USD INR again देखो sideways है. Nothing has changed in this, just sideways. Dollar goes up, this goes up. Dollar goes down, this goes down. Okay, so JPY USD, now this is looking very bearish. Where last week भी हमने discuss किया था, अभी भी it's looking totally bearish. But this is now at a very long term support. Okay, and Nikkei का हमने chart भी देखा था, it is also at a resistance. Okay, now यहाँ के अगर यहाँ से अगर रिवर्सल आता है, अब देखोगे यहाँ से अगर रिवर्सल आता है, दिस इज लॉन्ग टाइम लो, निकेई विल ब्लास्ट अप अगर यहाँ से रिवर्सल आता है. सिमिलरली अगर ये गिरता है तो वापस निकेई वहां झट से नीचे. तो इसमें क्या है, बिलो लास्ट वीक्स लो, दिस विल बी अ सेल. ओके, लुकिंग बेरिश. कीपिंग दिस इन माइंड, मोस्टली अगेन निकेई में जो हमारा व्यू था साइडवेज टू बेरिश, that is what actually which may transpire. Nikkei might actually take this resistance of trend line and now again will start falling. Okay, so clear guys on indices? Any query on anything? सर निके का जो आपने JPY USD देखा उस हिसाब से तो that was falling and Nikkei is rising, so isn't that उल्टा नहीं हो रहा उस केस में? I'm saying the last. लेकिन वो JPY USD तो इसलिए हो रहा था ना कि डॉलर बढ़ रहा था. सर तो उससे उनके मार्केट्स में इम्पैक्ट नहीं होगा? मार्केट्स में तो अभी भी कौन सा कोई ट्रेंड आ गया, थोड़ा पुल बैक ही तो हुआ है. स्टिल देयर इज एट अ रेजिस्टेंस. ऐसा थोड़ी ना होता है लाइक बाय लाइक की इस दिन ये हुआ तो डायरेक्टली, हाँ वैसा नहीं होता है ना, वो तो ट्रैप्स होते हैं ना मार्केट में. मैं अग्रीड, बट इसमें तो एकदम ऑपोजिट है. लाइक जितनी स्ट्रांग रेड कैंडल बन रही है उतनी स्ट्रांग उनकी ग्रीन कैंडल बनी है. तो मतलब दैट्स व्हाई आई वाज आस्किंग. So what does it mean? It might also signal ना कि this last जो आपका ये कैंडल बना है, like this is at a support, right? Long term support पे है ये. हो सकता है फॉल खत्म हो गया हो. So people anticipating this fall to get over and that's why they might be buying it. ठीक है, एंड उस केस में फिर ये और ऊपर जाना चाहिए अपना. हाँ, अब ये यहाँ से अगर जैसे रिवर्सल लेगा, देन अगर ये रिवर्सल लेता है तो ये ब्रेकआउट हो जाएगा. Similarly, अगर at the same time ये कंटिन्यू होता है तो this will take the resistance and will fall down. Right? Markets are forward looking. वो 10 साल आगे का देखते हैं. तो जस्ट सोचो ना, कोई बड़ा इन्वेस्टर हो और जब वो देख रहा है कि JPY USD ये मेरा लॉन्ग टर्म बॉटम है, दिस you see this is लॉन्ग टर्म बॉटम. लास्ट ईयर 2015 में बना था, 2015 के बाद ये वापस इस लेवल पे आया. इट्स वेरी गुड लॉन्ग टर्म बॉटम. लास्ट वीक जब यहाँ पे था तो कोई बड़ा इन्वेस्टर हो तो यही सोचेगा ना कि आप ये इससे नीचे और कितना जाएगा. So he will to start pumping money in the equity, right? Okay, yeah. ठीक है. Now if he is proven wrong, we'll short it. This is how you hedge your bigger investments.
banks and all. ठीक है? Anyone has any doubt? Anyone has any doubt? आगे बढ़े? Yes, sir. Please go ahead. Just a minute, guys. कितना दिन बचा है इस महीने में? 27, 4 दिन और. Vedanta can go in a sideways movement now. Let's see. Anyway, चलो निफ्टी देखते हैं. तो देखो निफ्टी में भी क्या हुआ है, ब्रेकआउट. निफ्टी ने कंटिन्यूएशन नहीं दिया, राइट? इंस्टेड निफ्टी वेंट ऑन अ साइडवेज मूव, जस्ट लाइक अ फ्लैग एंड पोल. ये पोल है उसका, ये फ्लैग है, बट दिस इज अ रेड कैंडल. सो इसमें व्हाट विल मेक मोर सेंस, अगर इसके नीचे आता है यू शुड लुक टू शॉर्ट इट. ओके, सो निफ्टी बायर्स विल बी साइडवेज टू डाउन. ओके, निफ्टी में बायर्स क्या होगा, साइडवेज टू डाउन. शॉर्ट कब करना, इफ इट क्लोजेस बिलो लास्ट वीक्स लो. ओके, साइडवेज टू डाउन, मोस्टली इट शुड फॉल. अच्छा, अगर फॉल होता है निफ्टी तो कितना होगा? What should be your target? Anyone? सर ये ग्रीन कैंडल का 50% रिट्रेसमेंट अगर वो तो हो चुका है ऑलमोस्ट. अच्छा हाँ ऑलमोस्ट हो ही गया. So, It's 16,800 is the support. I think. अब देखो 50% ऑफ दिस मूव इट शुड फॉल, मतलब समवेयर अराउंड 16,500 तक अगर गिरेगा तो 16,500 तक, कंसिडरिंग कि ये ब्रेकआउट है. सो दिस में फॉल बाय अनदर से हाउ मच, 500 पॉइंट, और अगर इसके नीचे आता है तो, एंड अगेन देन इट विल गो अप. दिस इज व्हाट माय व्यू इज, बिकॉज आई रियली फील कि ये बॉटम हो गया इन प्लेस. 1 2 3 इलियट वेव के हिसाब से बहुत बढ़िया एबीसी है. ठीक है, एवरीथिंग इज करेक्ट. 3 वेव, बीच में बी वेव, मतलब फैंटास्टिक. So looking very good. So again, agar if it falls, look to add on to your long-term stocks. That's why I asked this, nothing more. So don't panic. Don't sell out your long-term holdings. There will be a fall mostly, but it should not go beyond 16,500, 16,400. That's the reason where it should stop, and again it will go up. तो 16,500, 400 आता है, वापस ऐड करो 10-12 लाख, मतलब जितना हो उतना वापस ऐड करो जितना पोर्टफोलियो में है, if you have capital. सर एक बार आप वापस से वो 3 वेव बोलेंगे कैसे हुआ? दैट इज वन मोर एरिया वेयर आई एम स्ट्रगलिंग. 1 2 3 1 2 3. This 3 is 1 2 3, or you can just consider it as a, क्या बोलते हैं, नाम नहीं याद आ रहा है टर्म का, अभी नाम नहीं याद आ रहा है. 5 वे में भी हो सकता है, डायगोनल 5 वे या तो डायगोनल भी हो सकता है. 1 2 3 4 5 एंड देन 1 2 3. 1 2 3 में जब होता है तो इज इट लाइक देयर इज अ रूल दैट ऑल 1 2 3 का साइज हैज टू बी इक्वल, और इज देयर एनी, आर देयर एनी हैक्स कि 1 should be the smallest और 3 should not be the biggest? ऐसा कुछ नहीं है. And there is no such rule, but mostly if you see equal होता है, equal leg होता है, A और C का equal होगा unless and until it is a flat formation. Okay. स्लोप में डिफरेंस आ सकता है, बट लेंथ ऑलमोस्ट A और C की सेम होती है मोस्ट ऑफ द टाइम. इसमें भी देख लो,
ये तुम्हारा अगर ए होगा तो ये सी ऑलमोस्ट इक्वली होगा ये, देखो देखते हैं, दिस शुड बी ऑलमोस्ट इक्वल। देखो ये 1 यहाँ पे है, दिस ऑलमोस्ट इक्वल 1.23 से 20% ज्यादा है बस, ठीक है। सो ठीक है। यूजुअली इट इज इक्वल लाइक। So since we are considering making a long-term portfolio over here, so this is which wave is this looking like, this correction? This correction, which time frame you're talking about? No, different time frame, different If waves. you're looking at it in weekly only. वीकली में देखो, यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ से देखना पड़ेगा। ये पूरा 1 2 3 4 5 दिख रहा है, 2 ये थर्ड वेव का फर्स्ट वेव का करेक्शन है ये। फर्स्ट वेव में भी ये देखो, ये सिर्फ 1 हुआ है, ये 2, ये 1 2 1 2 वेव्स होती हैं, जैसे तुम्हारा ऐसा 1 2 1 2 1 2 1 सर आप 2। कह रहे हो कि आपके हिसाब से अब थर्ड ऑफ थर्ड शुरू होएगा वीकली टाइम फ्रेम में? थर्ड भी नहीं यार, ये तो देखो ये पूरा 1 है, ये 2 है, दिस इज 1 2, और इसमें भी देखो यहाँ पे ड्रॉप है, तो फिर ये जाएगा 1 2, ये 1 2 1 2, ये पूरा 3, ये पूरा 4 5, तो ये 1 2 3 4 5। ओके, तो थर्ड वेव का फिफ्थ वेव आना चाहिए। फिफ्थ वेव, अच्छा थर्ड का फिफ्थ वेव ना? हाँ, मतलब उसके बाद भी थर्ड में अभी फोर्थ और फिफ्थ है, दैट्स व्हाई बिगर टारगेट आई एम सेइंग इट शुड हैव। सर थर्ड के फिफ्थ के बाद तो फॉल आएगा इनएविटेबली थोड़ा फिर से। हाँ, ऑब्वियसली मार्केट इज नेवर यूनिडायरेक्शनल, फॉल नहीं आएगा तो लोग, देयर विल ऑलवेज बी सम पीपल नो विल बी बुकिंग प्रॉफिट, देयर विल ऑलवेज बी सम पीपल लुकिंग फॉर एंट्रीज, दैट्स व्हाट गिव्स राइज टू दीस वेव्स। But if you're looking at a long-term portfolio, I mean, what targets are we looking at from लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में तो तो वेव काउंट ना, फिर तुम कहाँ से देखोगे, like where will you start? Long term for you might be different, for someone else might be different. अब जैसे ये देखो मंथली चार्ट में देखो, दिस इज 1 2 3 4 5 का करेक्शन ओवर, this whole might be wave 1 2 and then 3 will come, and 3 should be larger than, not the smallest, so 3 should again it will be somewhere around 27,000 28,000। भूल जाओ, लॉन्ग टर्म बहुत ऊपर जाएगा। लॉन्ग टर्म में मार्केट हमेशा ऊपर जाता है, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि अगर सर, अभी मार्केट लॉन्ग fall- टर्म में ऊपर जाएंगे नहीं तो देयर वोंट बी पीपल हु विल पुट मनी, सिंपल। सर अभी जो हमने पोर्टफोलियो बनाया था, आई थिंक मोस्ट स्टॉक्स आर डूइंग वेल, बस एक सीसीएल का इशू है। तो अभी जब फॉल आता है वी शुड लुक टू अक्यूमुलेट सीसीएल, बट उसमें कुछ एसएल लेना है, एंड लेना है तो क्या है? सीसीएल में नहीं रखे रहो यार, दैट फॉल आ रहा है वो, दैट इज ओनली टाइम बिंग, ठीक है, देयर रिजल्ट्स आर वेरी गुड, सीसीएल फंडामेंटली इज अ वेरी गुड स्टॉक, कीप इट। अब जैसे as टाटा an एलेक्सी average का out देखो ना? 10% आया, पता थोड़े ना था 10% उस दिन मूवमेंट हो जाएगा, हाँ, जस्ट मतलब कि जैसे फंडामेंटली यहाँ इट इज गुड, सो वी बॉट, वी केप्ट इट। उसी तरह सीसीएल में भी किसी दिन आ जाएगा 10% मूव। हाँ, तो बेसिकली अभी फॉल आते तो अक्यूमुलेट करना चाहिए ना, क्योंकि उसकी बाइंग 500 के आसपास है मेरी। नहीं, अभी तो मत रखो उसको, एक्यूमुलेट मत, देखो एक्यूमुलेट में सिर्फ उसको करता हूँ जो भाग रहा होता है। अच्छा, जो चीज गिर रही है उसमें मैं और ज्यादा पैसा क्यों डालूं? देयर क्योंकि माइट बी आपको पता समथिंग आई वुड नहीं हैव, कितना गिरेगा। हाँ आई वुड हैव मिस समथिंग ना, क्यों गिर रहा है आई डोंट नो, फॉर मी एवरीथिंग इज लुकिंग गुड, सो आई एम इन्वेस्टेड, ओके, बट इफ इट इज फॉलिंग देयर हैज टू बी सम रीजन। नाउ why will I go and put my money in something which is going to just fall? Let Okay, it got come in green, then we'll think. Like I said, now pyramiding I do only in investing and options. गिरते हुए स्टॉक को एवरेज नहीं करना कभी भी, ठीक है। वो गलती मैंने यस बैंक में करी थी, हालत हो गई थी मेरी। So let's say this portfolio that we are looking at, हाँ, so when are we targeting to exit some of these? that is up to you यार, What? when you think, I usually never exit my portfolios, like I exited only a few things, कब 19 में मैंने एग्जिट किया था,
ठीक है, इलेक्शन के बाद जब काफी बड़ा था मार्केट, तो आई एग्जिटेड फ्यू ऑफ माय होल्डिंग्स देन। ओके, थैंकफुली 20 में फिर फॉल उतना आ गया तो वापस आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू गेट इन, राइट। एंड फिर लास्ट ईयर आई टोल्ड एवरीवन टू एग्जिट समवेयर अराउंड अक्टूबर, फिर उसके बाद देखो इतना बड़ा फॉल आया, अगेन आई एम एक्यूमुलेटिंग। So it's up to you how much money you want to make, but still there are few things I never exit, which I have like Bajaj Finance मेरे पास कब से पड़ा हुआ है, only ad, I never exit that. Titan मेरे पास बहुत पहले से पड़ा हुआ है, मैं सिर्फ उसे ऐड ही करता हूँ। Almost every portfolio I make, there will be Titan. ठीक है, because Titan देखो listed space में कौन है और ब्रांड ज्वेलरी का, कोई नहीं ऑलमोस्ट। I think TBZ is listed. Which one? Tribhuvan TBZ. होगा मे बी, आई डोंट नो, बट I think so. I think it is listed. जैसे पहले पीसी ज्वेलर था, फिर भी टाइटन यूज्ड टू राइज मोर, व्हाई? बिकॉज इट्स मोर ऑथेंटिक ब्रांड, राइट? Yeah, टाटा का है, yeah, of course. तो नो पॉइंट कल्याण एग्जिटिंग ज्वेलर्स सच भी है। होगा। मतलब कल्याण ज्वेलर्स एंड ऑल दीज आर नॉट इन दैट सेम लीग ना यार, एज टाइटन। Yes, it's not done well since IPO, sir. They are not also in FN now. So we'll keep holding Titan. Even now ITC is looking good. You can actually go ahead and buy ITC also now. But anyway, so ये रहा निफ्टी। बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी is worse of both. Nifty and निफ्टी में बैंक निफ्टी is really bad. बैंक निफ्टी last week also we discussed कि ये नीचे जाएगा, वो totally like that, closed near the bottom, still looking bearish. ठीक है, पहले जो ड्राइंग्स लगाते हैं बहुत सारे हैं। Look to sell it below last week's low. Okay, this should still continue falling, and this can again now fall somewhere near these levels। ये देखो, अगर तो ये आपका सपोर्ट एरिया है ना, ये यहाँ तक तो बैंक निफ्टी को आना ही आना है। तो टारगेट रहेगा इसमें अराउंड 34,000 का। 34,000 तक बैंक निफ्टी कैन कम, मतलब 1400 पॉइंट गिरना है इसको इस वीक में। बैंक निफ्टी पे व्यू रहेगा बेरिश। अब नाउ इधर यू वांट टू टेक एन इंट्राडे ट्रेड, गुड इनफ। अब 1400 पॉइंट हमारा टारगेट है, इंट्राडे में अगर 500-600 बन गया निकल लो, और अगर रखना है तो एट द एंड ऑफ द 600 पॉइंट के जब प्रॉफिट में हो, दैट इज द टाइम यू हेज। ओके, सो दैट इवन इफ इट रिवर्सेस, दैट हेज विल गिव यू प्रॉफिट। फिर बाकी देखते हैं। मीडिया में तो जी ने जो ब्रेकआउट दिया था, then PVR was there, that's why you see this still looking good. Okay, this is really looking good, looks like it। अब देखो यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस है, so if it goes above this, ideally you should buy, but at the same time you see there is a resistance, so if you buy you need to trail it very tightly, and if it closes above this resistance then it will continue to go up, but at the same time if you trail tightly and it reverses, you will end up losing less, or you end up being in profit still. So consider the possibility of a reversal. Mostly I'll be looking to sell it now. Okay, my view on media is negative. Finance very similar to bank nifty, sell, I don't want to explain it। IT सारे कैंडल देखो ग्रीन 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 ऊपर की ओर जाते हुए, दिस इज अ टारगेट वी हैव केप्ट, जब तक नहीं आता विल रिमेन बुलिश। ऑटो वेरी सिमिलर टू बैंक्स। फार्मा ऑलमोस्ट डन, ठीक है, दिस वाज द टारगेट, टारगेट डन। नाउ फार्मा इज अ सेल below last week's low। Pharma is also a sell। FMCG near the support, ideally should reverse, okay, but if at the same time it goes below last week's low, it will be a sell। Now looking at everything else, okay, everything else, if I see Nifty is looking bearish, okay, all other indices are looking bearish, banks are looking bearish, okay, so keeping that in mind, I'm putting FMCG as negative, but at the same time
इसका correction for me looks like is over. To be very honest, if I short it below, if it goes below this, I'll be very careful in shorting. I'll actually trail it tightly. Okay, with high chances this reverses. Okay, this doesn't continue down. नीचे जा सकता है, trap कर सकता है, but then reverse हो सकता है. That's my feeling on FMCG. Why are you saying this? It's a big red candle covering the green candle, and it's coming from a trend line resistance also. Yes, but it is that is support यार. ये देख रहे हो, ये support zone है ना इसका. This is the support. If you see, this is support area. This blue line. It's already there. So let's see. If it goes below that, yeah, we'll look to short. Like I said, as per price action, you should short it. But at the same time, like I said, ये 50% रिट्रेसमेंट भी हो चुका है. मतलब देखो इसमें मोस्टली जो मुझे लग रहा है एफएमसीजी में इट विल गो डाउन एंड देन इट विल कम अप. दैट्स व्हाट इट शुड हैपन. It will go down. Means intraday में still you can make money, but swing trading wise, I will not take a short position on FMCG. ठीक है. Metals clearly bullish. Last week also we discussed. Still continue to remain bullish. Okay, you can buy above last week's high. क्या पैसा बना है metals में. Reality also, see, reality is also looking bullish, more like a sideways movement. Okay, mostly it will go above. Okay, and you should look to buy if it goes above this last week's high. Okay, mostly इसका ये 1 2 and up 3 आना चाहिए. So reality is one sector we'll be looking this week. Some stocks in this sector do take swing trades. Okay, clear on indices? Any questions? रियलिटी का एक बार आई डिडंट अंडरस्टैंड. देखो ये नीचे गया ना, लेकिन क्लोजिंग इज It ऑलमोस्ट has नियर द just टॉप. closing the just broken the trend line once. या उसके बाद फर्स्ट कैंडल ही फॉर्म हुआ है अभी. यस फर्स्ट ग्रीन कैंडल ही फॉर्म हुआ. यस. इज दिस अ कंफर्म ब्रेकआउट या देखो ये ब्रेकआउट हुआ, गुड कैंडल, कंटिन्यूएशन, गुड कैंडल. दिस कैंडल दो रेड closed almost near the top shows that people have not carried their positions. If the shorts had been so strong, this would have closed down. People would have carried their shorts. Right now, it just shows that yeah, there were shorting in the week, but then it recovered. So there are people who are actually carrying long, not short. So that means I will be looking to buy. Okay. Only if it goes below last week's low, I'll be looking to sell, but I don't think so that will happen. So idea should be to look for longs in reality. Okay. राइट. चलो guys, now 4 बज रहे हैं, 10 मिनट ब्रेक लेते हैं, फुल 10 पे मिलते हैं. we'll discuss the stocks का. ठीक है. See you guys in 10 minutes. ओके. Drink now.
Hello everyone. Everyone's back. Yes, sir. Chalo, let's start with IT. So in C also, guys, if you see clearly bullish, okay, last week also I said it goes above this line, we had to buy. One should already be long in that. This is the target 1954. Okay, look to buy above last week's high for a target of 1954. Wipro looking weak near resistance, so avoid it. Okay, index is bullish. If the stock is looking bearish, avoid it. Okay, HCI Tech again. This is something index is bullish. This is looking bearish. Okay, avoid it. If you want to sell it, you can, because this candle is much better than Wipro if you see. Okay, so you can actually look to sell HCI Tech below last week's low. Okay, but I'll look to avoid it. LTTS, look to buy above last week's high. If it goes above last week's high, it also breaks this resistance and closes above it. So it's a good buy above last week's high. This just looks like a flag. Okay, and now looks like the upward movement has continued. 1, 2, 3 should come. Okay, equal leg. So it's almost something around 5400, 5500 is what your target should be. It's a good swing trade you can take here. Mindtree clearly long. I'm already long on it, by the way. Okay, this is a clear cut long. Go long on that. Okay, above last week high if you have not gone yet. Tech Mahindra is also a long above last week high. Most of the IT stocks will be long. LTI, leave it. Mostly it should go high, but leave it as of now. Now Oracle also, if you see near the trend line, not a very good candle. Okay, so if it goes below last week's low, look to sell, but mostly it will go above because the index is bullish in nature. So if it goes past last week's high, look to go long. Okay, we'll have to trail it tightly. Okay, and also depends on the candle which actually breaks that last week's high. TCS also is a long. Emphasis also is a long above last week's high. छोड़ दो Coforge, नौकरी को भी छोड़ दो, ठीक है. So almost all IT stocks are long above last week's high. Mostly we are already long. Anyone who has not taken long, wishes to take long, can take trades in the IT stocks on the long side. Metals, Adani, last week we discussed कि अगर यहाँ के ऊपर जाता है to buy, if reverses to sell, clearly went up, you guys should have been long. Okay, now this is approaching near all-time high. Okay, but still good amount of space left for it. So swing trade wise, you should not take any long, but intraday definitely you can look to go long over last week high. Okay, but don't take any kind of a swing trade. रतन मनी अब छोड़ दो इसको, ये मोस्टली साइडवेज ही रहेगा, इसके ऊपर जाएगा भी तो बहुत, लीव इट. Welspun is also at long above last week high. Enzyme छोड़ दो, Moi छोड़ दो, Vedanta, Evergreen still along, Hindalco still along. Sale Vedanta above what level we should look? Vedanta already we are long. If you are not long, then again you can buy above this. Just that every time you buy next week, your stops become higher and higher. Vedanta is a long. Sale is also a long. Okay. Last week's high. Jindal was a long given last week. Yeah, that
लास्ट वीक बोला था ये 1-2 सिमिलर टू व्हाट वी आर सीइंग। कहाँ था? एलटीटीएस में था ना? नहीं, रियलिटी, हाँ रियलिटी में देख रहे हो सेम स्ट्रक्चर जिंदल में था and we asked to go long. Had you guys taken long, you would have had made terrific amount of money. Still, it's a long. Tata Steel में भी long था, continue to remain long. JSW में भी long था, continue to remain long. APL Apollo, if it goes below last week's low, it will be a sell. Also, it will be a violation of the trend lines, so clear cut sell if it goes below. If it goes above, leave it. Coal India, also it's a long, but at the same time, Coal India is not looking that good, so avoid it as of now. NMDC भी छोड़ दो. National Aluminium will be a long above last week's high. ठीक है? So almost metals में भी सारे long है apart from APL Apollo. Okay? Rest everything is long and now auto will all be short. हाँ मारुति बताने की जरूरत नहीं है, looks clearly short for a minimum target to this trend line. Bharat Forge is long. So the tube को TVS is also a short. देखो I shall short है, but I don't want to take this short because this is near a support, so leave it. Next side is a short. Balkrishna Industries 1 2 3 1 2. Balkrishna is also a short, but guys देखो एक चीज, Balkrishna Industry might end up being like कि नीचे इसके जाए वापस से ऊपर निकल जाए, so be very careful with that because नीचे target is not that much. Very much possible goes below this, continues to go up because it also is looking like a 1 2 3. Okay, so be careful with it. M&M is also short. Amara Raja clearly short. Hero Moto also short. अब देखो Hero Motor and all, Hero Motor is also देखो नीचे जाएगा but not looking like it will make a new low, so you can take short but try to be only on the intraday short, something like that. It's not a swing trade. MRF is a clear cut short. Bajaj Auto bullish above last week's high, goes without saying. Ashok Leyland look to go long above last week's high, मतलब 118 के ऊपर. टाटा मोटर्स छोड़ दो इसको अभी. टाटा में by the way we are long already. Bosch is a clear cut sell, we are already short on this. ठीक है. So Mahindra and Mahindra is near the support zone. So that's why I said no कि these are the stocks where you take short, you cannot take a very good swing trade. You should look to wrap it off in a day. Right. But Mahindra and Mahindra is also looking good short. 720 तक 730 तक तो आना ही चाहिए. 30 पॉइंट है तो अच्छा खासा risk reward is good. So you can take this trade. Okay. Banks also will be mostly short. Clearly HDFC Bank is a sell. All of this are below last week's, okay? SBI in छोड़ दो, don't meddle with that. Okay, let's go.
ICICI will be a short. Axis is a short. Kotak is a short. Although Kotak may be na, it's not a very good short. So like I'll prefer to short an HDFC Bank or an ICICI Bank rather than a Kotak Bank because this is right at the support. So keep these things in mind. Blindly don't just look at red and blue and green and take positions. Bank of Baroda looks like a good long, okay, but everything else is negative. So be cautious. If Bank Nifty is falling, don't try to take a long position. IDFC will be a short. That's it in banks. So mostly shorts in banks. Pharma guys now done. With its up move, look to sell pharma. Let's see. Divis will be a sell below last week's low. Apollo छोड़ दो. Supply is a sell. Torrent Pharma is a sell. Dr. Reddy was a buy last week, still remains a buy. Okay. Be careful because the index is looking like it's done. Alchem just at its resistance. Right now looking bullish, but idea should be to look for shorts. Okay, it is looking very bullish, but look for shorts in this. Don't try to buy it. Mostly near resistance should work. It should start falling. Lupin तो एकदम ही गया बजरा चूतिया स्टॉक है. इसको भी शॉर्ट करो. Sun Pharma. Sun Pharma can be shorted, just be careful. Okay, this is also short below last to last week's low 880 के नीचे. Moro छोड़ दो. Again a short. Biocon looks like a good buy. Look to buy our last week's high. So again, mix of long and shorts, but mostly the idea should be to look for shorts. This might go down, but actually looks more like it will go up. Okay, the idea should be mostly, so for me, I will actually look to buy UBL somewhere near 1406 if I get it with a small stop loss. Galat hua to will short it, but my idea is to go look for long in UBL. Okay, don't take this trade. It might be a bit tricky, but okay, take it only if you can manage it. Okay, my idea is to go and look for longs near 1406, 9, 10, something like that. ITC clear cut long, continue to remain long. Okay, target recent high होगा. ITC सोचो यहाँ से मैं लॉन्ग दे रहा हूँ. 220 से 253 पहुंच गया, 260 तक जाएगा ये. Don't know how many of you had taken that. McDowell clearly short. छोड़ दो इसको. Bata look to go long above last week's high. Look to go short. UPL look to go long above last week's high. Leave it. Leave it. यूपीएल की कॉल कोई बार दोबारा देख. Long है last week high के ऊपर. Okay. Ultratech also you should look to go long above last week high. Marico is a clear cut short.
ओके, बस इसमें भी अगर सेम ही चीज है, you should look only for an intraday kind of a trade, not a swing trade, because the target is somewhere around 460, मतलब 18 पॉइंट का टारगेट है, that's it. So if you short, look to trade only intraday kind of trade. Godrej CP clearly short. I'm सर already अगर आप short on this. सर अगर आप यूपीएल को एक बारी डेली चार्ट पे देख सकते हैं, तो एक रेड कैंडल है फाइनल फ्राइडे को, ट्रेंड इज अप वेरी स्ट्रांग अपवर्ड. So what we said, buy only above last week's high, मतलब this, इसके ऊपर जाए तो बाई करो, अगर इसके नीचे आता है look for selling it. Different time frames, different trades. राइट. हाँ? This will also be a sell. अब देखो इसमें मैंने सेल कॉल नहीं दिया. Anyone can tell me why? This is also a very good red candle. Why I have not given any sell? It is more close to the support than the resistance. Not that. See, this chart is not clear. Upper, sideways, upper. It's more like a sideways move. So though it is looking like a sell, but it might just meander around. So not a very confident setup to go short. So just leave it. Same with page. जहाँ क्लियर ना हो छोड़ने का, जहाँ कोई ट्रेंड ही नहीं दिख रहा है, क्यों दिमाग लगाना उसमें. Britannia will be a short. Imami will be a short. Sri Cement is a short. Berger is a short. सब short है. देखो हिंद यूनिलीवर short नहीं करेंगे. It is also looking like a short, but it's almost at the support. So leave it. Midweek देखते हैं. मैंने तो क्या इसमें से ट्रिगर लगाने को. Ramco is a short. Voltage is short clearly. Sideways में ऊपर से reversal short कर सकते हो. Target रहेगा 1141. Okay. डावर छोड़ दो. जुबिलेंट नहीं रहना तो इसको भी छोड़ दो. जी क्लियर कट लॉन्ग है above last week high. Okay, but if it reverses, look on the daily chart like we looked at in the other example of UPL. Daily में अगर Friday लोग नीचे जाए then short it. But on the weekly charts looking good for a buy above 307 for a target of 370, 375. PVR looks like it's done. Because news भी अब आ गई. अब now is the time to look to sell. इसमें पक्का डेली पे रेड. अच्छा देखो इसमें भी बाई रहेगा इसके ऊपर, but mostly I'll be looking to short. Okay, it's looking more like a buy, but I'll be looking to sell it. I'll be waiting for it to reverse. I'll be waiting for it to fall, and then I'll make good money on the fall. ऊपर जाने में फायदा नहीं है, सबको पता है. पैसा बनेगा गिरेगा तब. LNT will be a sell below last week's low. Now the index is looking bullish, so be cautious. Phoenix is a buy.
Godrej Properties a buy over last week high. बढ़िया है ये काफी ऊपर जाएगा. Godrej Property you guys can buy for portfolio also. ये पक्का ये लास्ट recent high ये टच करेगा, पक्की बात है. Okay, buy it only over last week's high. Trend line पे है ये, so there is a resistance. Suntech is a sell below last week's low. Again देखो ये this is a support, so be careful. Iberia is a sell below last week's low. DLF is a buy over last week's high. Be careful, volatile stock. इसको sell. Finance. How do we know that DLF is a volatile stock? हाँ देखो ना डेली मूवमेंट, आई भी देखो उसको पता चलेगा. Chola is a buy. Last week also we were long, still will be long. M&M Finance छोड़ दो. SBI Life just sell below last week's low. Yeah. PL also I'll leave. Not looking. छोड़ो इसको भी. ICICI Pru Life is actually looking like a buy. I'm giving it as a buy, but unless you're very confident, don't take it, okay? EFC will be a sell. HDFC Life is clear-cut sell. क्या चल रहा है HDFC में? सब सेल है, बैंक हो, इंश्योरेंस हो. HDFC AMC is also a sell. सर एक सेपरेट क्वेश्चन है. सर अभी जो ये गवर्नमेंट का कुछ अभी 1-2 दिन पहले आया है दैट दे आर ईजिंग सम ये स्ट्रेटेजिक सेल करने के लिए जो नॉर्म्स है सेबी का ऑफर प्राइस वाला, उससे कुछ हो सकता है क्या? लाइक व्हाट इज योर व्यू ऑन PSU स्टॉक्स, बिकॉज़ वैल्यू बहुत है बट दे नेवर मूव. Actually, I've not read this news, but because I usually don't, so I have no idea. Doesn't matter. I don't know. I have no idea on. Are you very bullish? Are you bearish on PSUs in general, or bullish, or what? No, I ignore them. Neither bullish nor bearish. Not my cup of tea to find out what people are doing under the table. जिस दिन हो जाएगा प्राइवेट उस दिन देखेंगे. जब तक गवर्नमेंट के हाथ में, you guys all know यार कैसे गवर्नमेंट काम करती है, दिमागी क्यों लगाना. ठीक है. I don't like PSU companies at all. कुछ भी हो सकता है, like literally कुछ भी हो सकता है. जो चीज गवर्नमेंट के हाथ में हो ना, उसमें क्या ही ट्रेडिंग करोगे. Very difficult. Correct, yeah. पता चले कोई नेता, उनके घर के लोगों का उस खूब सारा इन्वेस्टमेंट है, they will give some government package. किसी को निकलना है, they will do something else. Why meddle in something which is so dicey? छोड़ दो. Government वाली चीजें I don't look at. Right. Muthoot is also a sell. So जो इतना बड़ा ग्रीन बार बने मथूट में, does that imply anything? Can you be louder? I'm saying मथूट में जो इतना बड़ा ग्रीन बार बना है, ग्रीन कहाँ पर? मथूट फाइनेंस. मुथूट फाइनेंस ने क्या बनाया? ड्रीम पार्क. ग्रीन कैंडल. ग्रीन कैंडल Yeah, if you see कहाँ है?
अराउंड अप्रैल टू जून के बीच में. ये वाला. Yeah. Does this have, मतलब इसका levels, does it signify anything? हाँ, this was the long term see ना रेस. ये देखो डबल टॉप था, यहाँ से गिरा था, फिर यहाँ से गिरा था. Went past that, went on to here. So can we take the base of the green candle to be a support area? यहाँ से जो buying आया, yes. हाँ, you can take it. Consider, sorry. You can take it, but for me, a better area will be. This is the area to look. This is the area I'll be looking at. And motive तो ऐसे देखो ना यार, गोल्ड गिरेगा तो ये भी गिरेगा. I was just trying to understand from price action. यहाँ ज़्यादा आपको reason देखो. Don't look at one point on the chart. Just look at from the reason whole. So MGL will be a sell below last week's low. Buy. Leave it. SRS actually sell it below last week's low. Okay. Almost like a triple top. 1, 2, 3. So look to sell it. You can make good amount of money here. IGL is also a sell below last week low. Show this go. Bullish है by the way, NAM India, but just leaving it. बहुत trade हो गया. IND Auto C almost at the top, might become a double top. So be ready, and this whole thing is sideways. So be ready to short it if you see any kind of a reversal from here. Okay. Daily chart में already होगा भी, I guess. ऑलमोस्ट एट द टॉप. कोई भी रिवर्सल दिखे सेल करने का इसको, ठीक है. और टारगेट सीधे नीचे डालना 174. नेक्स्ट वीक फ्यूचर्स लेना, नेक्स्ट मंथ, सॉरी, डोंट टेक दिस मंथ. Tata Chemical will be a buy of last week high. Similarly, since it's at the resistance, if you see a reversal, look to sell also. Aarti is a buy. It was a buy last week also. Indigo is also a buy. It was also a buy last week. And Reliance is also a buy for a target of 27.60. I don't trade in Reliance, by the way. Just sell. इसको मुझे भी sell करना है. Trend look to sell below last week's low. Similarly, if it goes above, look to buy also. So both. Sell. Sell. Portfolio. Sell. Gujarat Gas is a sell, guys. Last week we sell. क्लियर कट सेल है ना अभी तो. Yeah, last week से ही है. रखे रहो इसको sell में. Pfizer is also a sell. Sell Pfizer for sure. अच्छा गिरेगा ये. MFSL is also a good sell. BP share sell अभी नहीं है, but soon will become sell. So look, keep it in your watch list. Okay, this might definitely
fall a lot. Gautam, you asked me about BPCL only, right? Yes, I did. मैंने उस टाइम पे फिर ट्रेड एंटर नहीं किया था बिकॉज वी वर बोला नॉट था श्योर मैंने अबाउट तो द कैट. कि यस मोस्टली ये गिरेगा यहाँ से. यस राइट. सर बीपीसीएल का ऐसा नहीं लग रहा है कि ब्रेकआउट के बाद गिरेगा. फ्लैट एंड होल्ड टाइप है? नहीं, BPCL गिरेगा. सर बीपीसीएल इज एट कोई ब्रेकआउट नहीं है रेजिस्टेंस. इसमें. इनफैक्ट सेलिंग है, ट्रैप है. मोस्टली इट विल फॉल. सेल है ये भी. मन्नापुरम में जरूर चल करना. अच्छा ट्रेड दिख रहा है. दिस कैन एक्चुअली फॉल टिल हियर 78 79. इसको इसमें ऑप्शन भी ले सकते हो मन करे तो, और यू कैन क्रिएट एनी ऑप्शन स्ट्रैटेजी. दिस विल रियली फॉल अ लॉट इन नेक्स्ट मंथ. सर मनापुरम में वही साल है. मनापुरम में एटीएम वही अपना पुट बाय और ओटीएम पुट सेल नेक्स्ट मंथ. या कर सकते हो, लेकिन वो करने में थोड़ा तुम्हें इतना शायद वो ना मिले, मार्जिन नहीं मिलेगा, क्योंकि वो है ना छोटा स्टॉक है, लिक्विडिटी बहुत कम रहती है. आई प्रेफर टू सेल इन फ्यूचर्स, but if you guys want you can also create option strategy. But the problem only with option is a small stock, liquidity बहुत कम रहेगी. You might not get good your liquidity to buy or sell, so just be cautious about that. ठीक है, चलो guys, done for the day. Okay, mostly next week looks like we'll start with bearishness and end with bullishness. जैसे इस वीक था ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशन रहेगा. Buy industries क्या है? Yeah, Buy industries. I cannot understand. Can you repeat again? I industry you said or what? Yes sir, buy industries. I is still a buy above last week's high. It will be a buy. इसने बहुत सारे अप्स एंड डाउन देखे लास्ट वीक. ये अभी भी बाई रहेगा लास्ट वीक हाई के ऊपर. इसका टारगेट है ये ट्रेंड लाइन, जैसे लास्ट वीक मैंने बोला था सेम. कंटिन्यू टू गो लॉन्ग, स्टे लॉन्ग ऑन दिस. ओके, नाउ ओनली इफ यू आर लॉन्ग सिंस हियर व्हेन वी वेंट लॉन्ग, स्टे लॉन्ग. ओके, एल्स ट्रेल इट आल्सो, बट इफ इट गोज अबव दिस यू कैन इवन ऐड इट मोर. ठीक है, चलो गाइस. सर एक रिक्वेस्ट है सर, ये लास्ट वीक ऑफ द मंथ है, तो अगर आपको कोई ऑप्शन ट्रेड्स भी दिखे स्टॉक्स में, हाँ वो तो करेंगे. एंड थोड़ा अगर मतलब इफ दिस वीक वी आर रिलेटिवली फ्री, बिकॉज़ आपने जो बोला था एक्चुअली वही है, वो मार्च एंड के कारण अपना ट्रेड्स रह रहा है. बट इफ यू व्हेनेवर यू डू टेक आउट टाइम, जस्ट लाइक कीप अस डन. जो भी रहेगा विल टेक ट्रेड दिस वीक. श्योर, या सर परफेक्ट. एनटीपीसी एक बार फिर से देख सकते हैं ऑन डेली चार्ट. छोड़ दे रहे. एनटीपीसी अच्छा ही नहीं है. डेली पे देख के क्या ही होगा, सेम ही होगा ना. छोड़ दो. दिस होल थिंग इज नॉट गुड. कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल, एक बार इसको ब्रेकआउट होने दो इसको यहाँ से. ठीक है, मोस्टली इस वीक में भी ऐसे जाते जाते ऐसा जो बन रहा है ना, ये इसको रिजॉल्व होने दो पहले. कहीं या तो ऊपर या तो नीचे, उस डायरेक्शन में ट्रेड लेंगे. अभी तो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है. हर बार रिस्क रिवॉर्ड कम ही, रिस्क बढ़ता जा रहा है, रिवॉर्ड कम होता जा रहा है. नो पॉइंट लुकिंग एट दिस चार्ट. लीव इट. राइट. चलो, टेक केयर गाइस, एंजॉय. If you can just post this earlier, that would be better. We are traveling. I'm traveling, so a lot of चीजें थोड़ी बीच में मिस हो गई है. तो फिर 10 साढ़े 10 तक का ही ट्राई, बट 11 बजे ही आते हैं. चाहे कुछ भी करो, इतना टाइम लगेगा. अभी देखो क्या बज रहा है, 4:46 हो रहा है. 5 बजे तक ये कन्वर्ट होगा. पहले जूम वीडियो कन्वर्ट करने लायक, फिर उसको कन्वर्ट करने में लगेगा 3 घंटे. 8 साढ़े 8 9 बज जाता है. फिर अपलोड करने में 1 घंटा सवा घंटा.
वही अब बीच में अगर मैं आधा एक घंटा छोड़, ये तब जब मैं बैक टू बैक चीजें करूं, ये खत्म हुआ तुरंत दूसरा किया, तो इसलिए कंसिडर अराउंड 11 ओनली इट विल हैपन, by 11:30 should be online. I'll try to do it before but can't make promises on that. Yeah. सर मैंने जैसे आज ही ज्वाइन किया तो सर जैसे कुछ कुछ चीजें पूछनी थी कि जैसे अभी सर मैंने क्वार्टरली प्लान लिया है, तो सर वो कोर्सेस में एक्सेस कर पाऊंगा क्या? कोर्स का तो एक्सेस तुम्हें वैसे भी है। हाँ नहीं, वो एक्चुअली क्या, वो अभी जस्ट मैंने मेरी प्रोफाइल पे देखा जो मतलब ये आपके वेबसाइट पे बनाई थी ना। अच्छा, वो वेबसाइट पे भी तुम्हें एक्सेस दिया ना एलजीबी? हाँ तो वही मतलब मैंने देखा था सब्सक्रिप्शंस नील दिखा रहा था, मैं पूछूं आपसे एक बार कि एलजीबी कैसा क्या रहता है। और सर मतलब जैसे अभी जैसे करंटली जैसे एंटर्ड इन सबसे थोड़ा सा न्यू हूँ, इन्वेस्टिंग का थोड़ा बहुत आइडिया है, तो मतलब वो जैसे कैसे आप वो मतलब उस पे फ्री ग्रुप पे आप दिखाते थे ना कि कैसे आप वो ट्रेड्स का बताते थे, तो उसके लिए सर मतलब कितनी कैपिटल होनी चाहिए कि जैसे अगर फ्यूचर्स में करें या मतलब किस में करना चाहिए, 3 to फ्यूचर या 5 ऑप्शंस lakhs में? or 3 to 5 lakhs. Wait 1 week, you just see. Okay. No जी need take सर। intraday trades. जी। Wait for a week and then उसके बाद जो डाउट लगे पूछना, ठीक है? अच्छा तो सर वो फ्यूचर्स में ही लूं ट्रेड की, मतलब कैसे लेनी है वो? जो ट्रेड इंट्राडे में मिलते हैं वो फ्यूचर्स में हो या ऑप्शंस में, टेक दैट, ठीक है? अच्छा। जी सर। चलो ओके गाइस, सर। see you. Bye bye guys. ओके सर, बाय सर।